This conference will now be recorded. Hello, Vito. How are you? हेलो सर। हेलो बेटे, कैसे हो? ठीक है सर। ऑल वेल। तो कल मैंने एक रिकॉर्डिंग भेजी थी, डिड यू सी दैट? यस सर। यस सर। Yes, sir. So didn't that motivate you? Yes, how sir. we all are formed? कभी सोचा था इसके बारे में कि ये एटम आया कहाँ से है? तो it all happened. The destruction of the star took place. तो आपने क्या देखा होगा उसमें? पहले हाइड्रोजन और हीलियम तो होता ही है, फिर कार्बन बनता है और अल्टीमेटली कौन सा एलिमेंट बनता है? आयरन. आयरन बिकम्स द डेथ ऑफ द स्टार. तो जैसे ही आयरन बनता है तो स्टार उस वक्त वो फटता है. जब वो फटता है तो उसके मास के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो क्या बनाता है. और आपने ये भी देखा होगा कि व्हाई अदर एलिमेंट्स टिल आयरन आर रेयर. आयरन से नीचे नीचे तो आसानी से बनते हैं क्योंकि वो तो सूरज में या सन में, जिसको हम बोले, उसके अंदर बन रहे हैं. बट व्हेन इट ब्लास्ट, उस समय टाइम कम होता है ना, एज कंपेयर टू जो सन की पूरी जो स्टार की लाइफ साइकिल था. तो उस समय बाकी एलिमेंट गोल्ड, प्लैटिनम, इरिडियम, ऑस्मियम, ये सारे बनते हैं. एंड दोज आर बम्बार्डेड इन द होल यूनिवर्स. तो आप उसको सुपरनोवा या न्यूट्रॉन स्टार या ये सब कुछ आपने देखा होगा. इजंट इट इंटरेस्टिंग? एंड सी हाउ डज द गॉड क्रिएट ऑल दीज एलिमेंट. सो दिस इज बेसिकली, हमने एक बिल्डिंग है द पीरियोडिक टेबल. इसमें जो ऊपर की तरफ है दीज आर हल्के एलिमेंट, और जो नीचे की तरफ है दीज आर हेवियर एलिमेंट. हेवियर इन टर्म्स ऑफ मास. आप इमेजिन कीजिए ना, आपने एक बिल्डिंग बनाई है, तो अगर आप उसमें भारी भरकम चीजें ऊपर रखोगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द बिल्डिंग इज गोइंग टू कोलैप्स. सो यू सी हाइड्रोजन, हीलियम, दीज आर लाइटर एलिमेंट. दे कम ऑन द टॉप. एंड जैसे जैसे देखो ये आयरन आना शुरू हो गया है, आयरन को के बाद जैसे जैसे ये नीचे जाते हैं तो इनका एटॉमिक नंबर और इनका मास, वी कॉल द 4 serial number is for beryllium. We say the 30th serial number is for zinc. We say इधर 92 कहाँ पे होगा? देखिए 92, ये this is a uranium 92. This is the last element जिसके नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी होते हैं. आप लोगों ने आइसोटोप सुना हुआ है? आज हम आपको करवाएंगे. आइसोटोप्स आर गोइंग टू बी एटम्स, राइट? और एलिमेंट के एटम्स होंगे जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होगा बट न्यूट्रॉन्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट होगा. एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिस्ट्री. आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली आता होगा, right? Before next class, I want you people to remember the first 20 elements up to potassium, calcium, right? Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium and calcium. Just first 20. And memory का मतलब ये नहीं कि रटते रहना है. memory का मतलब है repeat it the way I ask you every time. Will you do it? That will go as a homework. So उससे अगले दिन हम सिर्फ 30 तक याद करेंगे, और मुझे सिर्फ 30 तक ही याद करने हैं. इससे आगे मुझे नहीं जाना है, वो अपने ढंग से मैं करवा लूंगा. Rather I tell you, within a 1 month you will be remembering the whole periodic table. And this is all the elements which have created the whole universe. And one more interesting thing, everything which comes into life, एटम भी लाइफ है, मैं भी लाइफ हूं, आप भी लाइफ है, वो पेड़ भी लाइफ है, और कोई एनिमल भी लाइफ में आया है. It has an expiry date. Someday it will go. And it happens with all these elements also. All these elements. The hydrogen will also die, the aluminium will also die, the thallium will also die. इनमें से कुछ की डेथ जल्दी होती है, मे बी कुछ डेज में, कुछ ईयर्स में, और कुछ की डेथ हैपन्स इन सेंचुरीज एंड मे बी मोर देन दैट. तो जिनकी लाइफ हमारी आंखों के आगे खत्म हो जाती है, हम उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं. ये जो रेड कलर से लिखे गए हैं ना बेटे, जितने भी रेड कलर से हैं, दीज ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट.
Neptunium, Plutonium, Americum, Mercury, Berkelium, Californium, Einsteinium, Fermium, Mendelevium, Nobelium और Lawrencium, ये सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम हैं। एंड देखो यहाँ से रदरफोर्डियम, राइट, बोहरियम, आप ये सारे धीरे धीरे करके देखेंगे। These certain scientist और certain place, कोई इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी के ऊपर भी है, जैसे बर्कले इज द लेबोरेटरी, तो ये काफी उनके ऊपर है। एनीवे, एजेंडा इज इनसे धीरे धीरे करके दोस्ती करना है, नहीं करना है। सो वी डिड इन द लास्ट क्लास तनवीर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटे, है ना, प्रोटॉन and neutron, those are known as fundamental particles. What do you mean by fundamental particle? Smallest particle which is going to have, बाकियों में वो multiples में आएगा, with the help of an experiment known as the discharge tube experiment. Now you remember what we did. This table is important. You should write it after the class on the first page of your notebook. अपनी जो notebook बनाते हैं ना, उसमें 5 you just leave it empty. We will be writing certain important thing there जो भी हमें course of study में मिलता रहेगा, और ये चीजें धीरे धीरे करके हम इसको याद करते हैं, और आप इनको जितनी बार देखोगे उतना आप इनको अच्छा याद पाओगे। सो रेपिटेशन है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, मैंने गलती से यहाँ पे प्लस लिख दिया है, लेट अस मेक इट नेगेटिव, 1.602 10⁻⁻19 कूलम। Relative charge -1, and remember charge cannot be less than -1. It cannot be 0.75, it cannot be 1.25, because अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो या वो 2 होंगे या वो 3 होंगे, it will be multiples में होंगे। Have you ever seen half cow walking on the street? No. So if electron exists, it has to exist in whole number. If proton exists, it has to exist in whole number. If neutron exists, it has to exist in whole number. So what is the charge, bete? 1.602 into -19 coulombs on an electron. The charge on proton is similar in magnitude, but just opposite in sign. Many number of times you will not be writing plus because it is going to be implied. And you know, 1.602 into -19 coulomb is 4.8 into -10 ESU, where ESU is the CGS unit, electrostatic unit. इनको याद नहीं करना है, इनको बस यूज करना है बार बार, ये दोनों चीजें आपके काम में आएंगी, and when you practically know how to use that. And beta, what is the charge on neutron? Neutral. What is the charge here? 0. The mass, the electron is the lightest, सबसे हल्का fundamental particle. It is going to be 9.10, you can take 9.1 perfectly well, into -31 kg. And the mass of proton is 1.67. All practical purposes we will take 1.67. But yes, you should know 262 and you should know 493 after 1.67 is the mass of neutron. So which is the heaviest subatomic particle? Neutron. Which is the lightest subatomic particle? Electron. हम ये जो mass of proton है या mass of neutron है, इसको approximately 1 unit बोल देते हैं. We are human being. We should devise certain units. So we have devised. Mass of one proton is called as approximate 1 unit. Neutron को भी 1 unit क्या देते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का मास उसके मुकाबले 0.0054 टाइम्स है. What you have called that mass of electron is approximately 1831636 times mass of proton, right? That is going to be the mass of this. For example, अगर आप इस टेबल में देखें, hydrogen has only 1 proton, no neutron. So what is the mass? 1. It is taken as 1. Helium has 2 proton and 2 neutron. तो इसका मास क्या होगा? 4. Right? You will be learning धीरे धीरे करके आप इनको देखने वाले हैं. So that will be the agenda of today class. So let us start. Whatever we have learned, we are now moving ahead. You remember atomic number is equal to number of protons
in a nucleus. Mass number is number of protons and number of neutrons. It is going to be P plus N. That means you can work out what is going to be the neutron beta. Proton plus neutron minus proton, that is going to be neutron. Do you understand? Always remember, proton is equal to electrons in an atom. Ion is a different thing. I'm not calling calcium ion. I'm not calling for O minus 2. इनके लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे. But a neutral atom, calcium, oxygen, nitrogen, in all of them, the protons will always be equal to the electrons. It is known as principle of electroneutrality. Positive charges will be always equal to negative charge in a neutral thing. For an ion, number of electron changes, but number of protons and neutron always remain constant. Everything we are writing is going to be important thing from fundamental. For example, watch this screen. Let us talk about helium. Helium has atom की बात कर रहा हूं बेटे. Helium has 2 proton and 2 neutron. Check it. Proton and electron are always going to be equal. Always going to be equal. The proton and electron for neutral atom. See, oxygen, proton 8, electron 8, right? Now let's see the cation. What is cation? The loss of electron produces cation. What is anion? The gain of electron producing anion. So when I remove 2 electron, it is going to acquire positive 2 charge. Now the proton and electrons will not be equal, but there is no change on the number of neutrons and protons, because whenever you remove electron from extra nuclear region. When you add electron in the extra nuclear region. We never touch nucleus. And such as chemistry. Chemistry is nothing but हम आपको electron के रास्ते से पूरी की पूरी chemistry पे चढ़ा देंगे. We never ever touch nucleus. Nucleus is touched by physicists, जो कि nuclear fusion या nuclear fission नाम के reaction करेंगे. We will not touch the nucleus. We will touch the extraterrestrial, extra nuclear charge. Now see this bit. This is going to be the oxygen atom. You understand, in oxygen atom, Sakshi, what happens? The number of electron and protons are going to be barabar bete, है ना? देख पा रहा है? अब if we add 1 electron, it will acquire minus charge. See Raja, now proton and electron have become different. And at the same time, there is no effect on the nucleus. I'm stressing it again and again because I mean something. If you add 2 electrons, see, the electrons are increased, but proton and neutron are not touched. If you remove an electron, 8 की जगह पे, what is going to happen? 7. But this is going to be the same. So I again stress, ionization always keep the atomic number, mass number, proton and neutron always same. The number of electron decreases in cation. The number of electron increases in anion with respect to the neutral atom. Now, the next thing, representation of the nucleus. We represent X. What is X? The element atomic symbol. The atomic symbol. Beryllium, vanadium, uranium, iron, silicon is going to be X. You know quite a few. जो नहीं याद है उनको भी हम धीरे धीरे करके आपसे याद करवा लेंगे. So X is the symbol of the element. A is the mass number. And Z is going to be the atomic number. याद रखने के लिए आपके और मेरे बीच में इनमें से जो भी ज्यादा है, for example, iron has 56 mass number and 26 is the atomic number. And beta, your choice, you can write it like this.
or you can write it like this. We do not object. You can write it like this or this. Matlab, either you can write left or you can write right, or you can write one left and one right. The only thing I advise you, whatever your NCERT use, you should follow that, right? That is going to be a better option. But otherwise, तीनों are going to be equal. I repeat, याद करने के लिए the ज्यादा वाली चीज is going to be kept ऊपर so that atom, ये मेरे और आपके बीच में कहानी है, उड़ ना जाए, just to make you remember, right? For example, oxygen is going to be represented as 16:8. What does that mean? Its proton and neutron is equal to 16 and its proton is going to be 8. And if it is a neutral atom, it is always going to be equal to electron. Important thing, the representation of the nucleus of an atom is same as that for an ion. For example, if you write the O minus 2, what is O minus 2? It is going to have similar representation as compared to the atom. Why? Because it is the nucleus. In nucleus, touch. Hello, what happened? Any questions, Vede? Can you repeat proton and neutron part? Huh? Proton and neutron part, sir. Proton and neutron. Why not? Yes, sir. So, do you remember what is going to be the atomic number? Calcium के लिए, say calcium के लिए proton and neutron is equal to 40 and the proton is going to be 20. So what shall I keep? ऊपर क्या रखूं? 40 and नीचे क्या रखूं? This is going to be 20. Right. Now let's remove 2 electron from that. तो अभी भी ऊपर आप क्या रखते हैं न्यूक्लियस के लिए 40 और नीचे आप क्या रखते हैं एटॉमिक नंबर. Only thing is you can write +2 here. That +2 matlab it means loss of 2 electron, but the representation of an atom or representation of an ion will remain same. For example, last class you said me that this is going to be helium. If we remove 2 electron, this is going to be the helium what nucleus, and that is going to be the alpha particle. So representation is not going to change whether you take Rohit the Yes, sir. nucleus or you take Raja the atom. Do you understand, Rohit? Yes, sir. Shall I repeat it? Shall I give you an example or it's okay? Rohit, It's कोई okay, भी sir. एक बोलो जो आपको आता हो, कोई भी एक एटम बोलो जो भी आपको याद हो बेटे. नो टेस्ट. Helium, Oxygen. neon, oxygen. Very good. So this is oxygen में बेटे प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 8. न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 8. याद मत करो, 8. अपने आप पता लग जाएगा. ठीक, धीरे धीरे करके अपने आप पता लग जाएगा. So what shall I write? 16. 8 plus क्या लिखूं? 8. 8. Now Rohit, it's just to check you, right? You have understood. If I add 2 electron, then बेटे इसमें प्रोटॉन कितने रहेंगे? 8. 8. न्यूट्रॉन कितने रहेंगे? 8. 8. और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे दोस्त? 10. Very right. And you can write it O minus 2 और अगर जरूरत पड़ी you can write 16, 8, हाँ जी बेटे minus 2. Do you understand? Yes, sir. दोनों is going to be the same thing. Welcome dear. Okay. So Thank you, X sir. going to be the representation. Sir, I of- have a doubt. पूछो जी कौन बोल रहा है पहले तो बताओ मुझे. Sir, Amodini. लो बेटे बोलो बोलो प्लीज. सर जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो प्रोटॉन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो तो न्यूक्लियस में बैठा है. चलो एक बात करते हैं. Right? What is a nucleus? It contains protons and neutrons. Where does the electron lives? Outside. If you add electron, you add electron here. If you remove electron, you remove electron from this. You never ever touch the nucleus. So proton and neutron, Amodini, lives in
हाँ जी गुड़िया, न्यूक्लियस। Yes, sir. तो during ionization, what is ionization? Loss or gain of electron. Electron loss or electron gain, right, does Yes, sir. not happen in nucleus. Therefore, I repeat, the mass number, what is the symbol, Vidya? A, A and atomic number Z. हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, repetition is important. remains the same. It remains constant. You know, this you might be thinking कि ये छोटा सा डाउट था कि आपको शर्म आ रही थी, but this is the base bit. So it is good you have asked, right? Don't Yes, sir. hesitate. So your doubts are most important. अगर आप इसी को clear नहीं करोगे तो हम आगे जो आपके लिए problems लेके आ रहे हैं, you will be trapped. So Amodini, I want to hear from you once again. For an ion, number of electron changes, but number of proton and neutron always remains same. I just give you an example. That is the sun, right? बहुत साल Yes, sir. पहले, 4 करोड़ साल पहले, it is a truth. The Jupiter जो बाहर था वो अंदर की तरफ आया. उसने सारे के Yes. सारी सफाई की और उसी की वजह से हमें पानी मिला, राइट? बट वो वापस भी चला गया. क्या सन के ऊपर कोई फर्क पड़ा? नो. No. If planets, the asteroids, are going to enter into the solar system, they will be entering outside the star. So star, the nucleus, will remain intact. Is it clear, Dolly? So Yes, sir. during ionization, the representation of the nucleus remains same. Shall we move ahead? That was Yes, sir. wonderful, Rohit, Amodini. Right, I appreciate that. So, do you people understand? Do you people remember? Repetition, atomic number represented by Z. It is a total positive charge of nucleus or number of protons present in the nucleus. In other words, it is a serial number of the element in modern periodic table. Remember page number 10. वापस आएंगे. For example, ये जो भी number लिखे जा रहे हैं, what does that mean? That means atomic number, that means number of protons, or in easy language, roll number 77, iridium. What is roll number? Number of protons. What is roll number 38? Strontium. What is roll number 38? The atomic, yes, bolo bede, number. Atomic number is going to be number of protons. Do you clear? What is atomic number? Atomic number is the number of protons. Mass number, atomic weight rounded off to its nearest whole number is known as mass number. Atomic weight rounded off to nearest whole number is known as mass number. In other words, mass number is equal to number of protons plus neutron, because you take approximate mass of proton to be 1, approximate mass of neutron to be 1. So if I say the helium, the number of protons is 2, the number of neutron is 2, and its mass number is going to be 4. If I say normal isotope of carbon, the number of proton is 6, number of neutron is 6, and that is going to be 12. And it is always not necessary that protons will be equal to neutrons. Protons and neutrons कभी बराबर हो भी सकते हैं और कभी नहीं भी हो सकते हैं. See बेटे, what is the role of neutron in the nucleus? That is we are going to discuss. Nucleus के अंदर क्या रहते हैं? Basically protons. Now when we add another proton, that is proton plus proton, what will happen there? The repulsions are going to be created. Why? This positive and positive is always going to fight. Negative and negative always fight. Positive and negative are going to attract. Therefore, neutrons, ये हम नहीं ऐड कर रहे हैं, the mother nature is doing. Neutrons are added to minimize
the लड़ाई, the repulsions between proton and proton. In other words, we can say the neutrons, I'm sorry spelling गलत हो गया, भी सुधार देते हैं. Neutrons acts as a policeman, right, to protect the repulsions between proton and proton, to break the nucleus. Do you understand? Right, कदम, can you unmute वीडियो? अगर माइक काम करता है, अगर कदम माइक नहीं, अरे वाह, गुड. तो न्यूट्रॉन का रोल आपने देखा, आजकल हम सब लोगों को घर के अंदर डाला हुआ है, बिकॉज द गवर्नमेंट वांट दैट वी शुड बी सेव्ड एंड दैट इज अ गुड आइडिया. एंड अगर हम रूल तोड़ते हैं या कोई बदतमीज लोग रूल तोड़ते हैं, देन हु इज गोइंग टू कम? द पुलिसमैन. भाई घर के अंदर चलो, अदरवाइज द सोसाइटी इज गोइंग टू सफर. नाउ पुलिसमैन का रोल कौन कर रहा है गुड़िया? द न्यूट्रॉन इज एक्टिंग लाइक अ पुलिसमैन. गुड़िया सबसे छोटा एटम बोलो. और देख, मेरी क्लास में गलती की कभी कोई चिंता मत करना, गलती मेरी, ठीक आपका, और गलती करने के बाद सीखना आपका. कभी भी बड़ी से बड़ी चीज पे बी एश्योर्ड, आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट. बड़ी से बड़ी गलती पे भी आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट यू, राइट. तो कभी तो बेटे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर चल कितने प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन. तो क्या यहाँ पे कोई रिपल्शन होगी? नो. नहीं. So therefore बहना, मैं ऐसे भी बोलता हूँ बच्चों को, there is going to be no need of, हाँ जी गुड़िया, न्यूट्रॉन. आगे चलते हैं बेटे, हीलियम पे चलते हैं. अब हीलियम के अंदर कितने प्रोटॉन मदर नेचर ने डाले? 2. तो इसके अंदर तो लड़ाई होनी थी, है ना, इसके अंदर तो लड़ाई होनी थी, किसकी? प्रोटॉन और प्रोटॉन की. देन द मदर सेड कि तुम ना लड़ो, तो आप उसके अंदर क्या रख देते हैं? न्यूट्रॉन. सो आपके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हुए, राइट. हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, बाकी के ऊपर ध्यान करना. आप एक बड़ी अच्छी चीज समझने जा रहे हैं. लेट इट बी गुड़िया, लिथियम में चलते हैं. कुछ चीजें आपको ना पता हो. तो प्रोटॉन और प्रोटॉन, लिथियम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 3, right? We do not know. It is the mother who is doing all this thing. The mother read as the nature, has kept the 4 neutron here, right? You observe, मजेदार चीज ऑब्जर्व कर. आयरन पे चलते हैं. आयरन के अंदर 26 प्रोटॉन होते हैं, right? See, observe. देखो, scientist is always going to have an observation. So it has how many neutron? The 30 neutrons. Are you observing a trend? That observe karo, neutrons are always greater or equal to proton. There is going to be less exception. Which is an exception? Hydrogen. It has 0 neutron and 1 proton. Otherwise, neutrons are always going to be equal or greater than proton. Is it okay? Why? That's a natural rule. Protons is always going to be lesser or at most equal हो सकते हैं, but वो कभी न्यूट्रॉन के मुकाबले ज्यादा नहीं हो सकते हैं. We have only very few exceptions, right? You can mute Guria. Okay. वेलकम. अनुवंश, अनम्यूट करें अपने आप को बेटे. Yes sir. कम फॉरवर्ड. देख बेटे, साइंस है ना, तो आफ्टर 20 years from now, that is a minimum time you will take to become the greatest scientist, right? So that is minimum time. तो आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी. इवन आज की क्लास के बाद आपकी पिछली क्लास से ज्यादा नॉलेज होगी. Exceptions where neutrons are less than proton. समझ आया ना बेटे? अभी भी हमें कदम ने बताया, न्यूट्रॉन इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर और एट मोस्ट इक्वल. ये बहुत कम केसेस हैं. 1 is
द हाइड्रोजन, राइट। हम इसको बेटे प्रोशियम भी बोलते हैं, राइट, क्योंकि अभी आपको पता लगेगा, इसके आइसोटोप इंट्रोड्यूस करूंगा। इसमें वी हैव न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0। There is one more very interesting example, that is going to be helium. Yep, the 3 2, right? Here the number of neutron is 1, the proton is 2. अभी बताता हूं, it is an isotope of helium, अभी बताता हूं, right? और ये एक बड़ा मजेदार न्यूक्लियस है। This nucleus is used, will be used for fusion reaction. अनुवंश, आपने fusion reaction सुना हुआ है? एक Yes, sir. न्यूक्लियर रिएक्शन होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन में हम जोड़ते हैं, जो सन के अंदर हो रहा है, दैट इज फ्यूजन। एंड दिस इज गोइंग टू गिव अस अ लार्ज अमाउंट ऑफ क्लीन एनर्जी, एंड वी आर इन द पाथ ऑफ डेवलपिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। हमारे पास जो रिएक्टर हैं वो न्यूक्लियर फिजन के हैं। और अनुवंश, एक टारगेट देता हूं, एक फ्यूचर देता हूं आप लोगों को, जो भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर डिस्कवर करेगा वो साइंस में अमर हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अमर? लाइक आइंस्टाइन, लाइक न्यूटन, they were the greatest scientist we can observe. So that is going to be अमर हो जाएगा जो भी इसको ढूंढेगा। अभी तक हमने इसको ढूंढा नहीं है। वो इस कॉलर 001, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yes, caller 001, please introduce yourself, otherwise you are going to be dismissed. Right? So all of you are supposed to join with your original name, otherwise you will be immediately dismissed from the class. So that is So stable कौन सा होता है सर इनमें से ज्यादा? सर हीलियम का आइसोटोप? नहीं, स्टेबिलिटी के लिए, अरे भाई यार, तुम तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो। आई अप्रिशिएट यू पीपल, राइट। चलिए आपको और चीज बताता हूँ, ठीक। सी, यू आर आस्किंग क्वेश्चन, सो दैट इज यू आर रिवार्डेड। ओके बेटे, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? बताइए। रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, इमिशन ऑफ एक्टिव radiations from an atom। एक एटम पड़ा अपने आप उसमें से एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, राइट बेटे। कुछ एटम्स, जैसे आप जिसने बात की आपने अभी हीलियम, इसकी जो लाइफ है, इसकी जो जिंदगी है, दैट इज वेरी 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 हाई, लॉन्ग। It may be running into, बेटे मुझे पता नहीं है, 10 to the power maybe 10 years, maybe more than that, ठीक। कुछ अनुवंश आपने शायद बेटे सुने हैं, यूरेनियम 23592, इनका जो लाइफ है इज वेरी वेरी लेस, मे बी बेटे दे हैव लाइफ ऑफ फ्यू डेज। सो हम ऐसे एलिमेंट को जो हमारी जिंदगी में खत्म हो जाएंगे, हम उसको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। डू यू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग बेटे, व्हाट आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट? सर यूरेनियम है सर, उनकी जैसे लाइफ को कई बार हाफ लाइफ लिखा होता है। वेरी गुड। सो इनकी जो रेडियो एक्टिविटी है ना, वो हम हाफ लाइफ पीरियड से देखते हैं। हाफ लाइफ पीरियड होता है 100 एटम्स कितने समय में 50 एटम्स रहते हैं। ये आप +2 में जाके केमिकल काइनेटिक्स में सीखेंगे। The lesser is the half life, the more reactive is the element. For example, जो कार्बन C14 है, अभी आ रहा है बेटे, आइसोटोप्स आ रहे हैं, उसका जो हाफ लाइफ है, there's a very interesting discussion going on and it is related with atomic structure and it is related with your science. मैंने ये अगले सेशन में लेना था, बट क्योंकि आपने पूछा तो मैं अभी ले रहा हूँ। तो बेटे हाफ लाइफ पीरियड होता है when given number of atoms converts into or are reduced to half of its quantity। 100 एटम्स 50 में रह जाएं एंड मे बी 50 एटम्स 25 में रह जाएं, दैट इज द हाफ लाइफ पीरियड। आप लोगों ने रेडियम सुना हुआ है? रेडियम मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया था,
रेडियम का जो हाफ लाइफ है दैट इज फ्यू मिनट्स का है। सो इसका मतलब ये हमारी आंखों के सामने ये डिकम्पोज कर जाएगा, और जो ऐसे एलिमेंट होंगे वो डेफिनेटली अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स पैदा करेंगे, और वो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू dissociate and that is going to be harmful for us. It is not our way. Anyway, stay with me, right? This is a very interesting topic. The radioactivity. What is radioactivity, Raja? emission of emission of active radiation का मतलब जिससे कोई हमारा गेन या लॉस हो सके, राइट सर? रेडियो एक्टिविटी बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, शायद आप लोगों ने सुना है, नहीं है तो मैं सुना दूंगा। दिस इज गोइंग टू बी बीटा पार्टिकल्स, राइट? बीटा पार्टिकल्स आर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब भी बताता हूं, कमिंग out from nucleus. I know you are surprised. Just wait. Right? इलेक्ट्रॉन के अंदर से न्यूक्लियस कैसे आ सकता है? इलेक्ट्रॉन के अंदर तो न्यूक्लियस रहता ही नहीं है। अभी बताता हूं बेटे। Then it is going to be, ये क्या सिंबल है बेटे? अल्फा। अल्फा particles. What are alpha particles? These are the helium, हाँ जी, न्यूक्लियस है जो अभी भी आपने लिखा ना, हीलियम 422+, and there is the gamma rays. आप ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब कुछ पढ़ने वाले हो। गामा रेज आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सुना हुआ आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Yes, वेव्स sir. जिसमें बैठे हैं रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सारे के सारे आते हैं बेटे द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ये देखते हैं बीटा पार्टिकल के ऊपर ध्यान करते हैं। द बीटा पार्टिकल, इट इज ऑल टू बी कॉपीड डाउन आफ्टर द क्लास, राइट बेटो? अब देखो, द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इज द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी। When neutron proton ratio, neutron divided by proton ratio is equal to 1, the atom is found to be stable. आपको पता है ना, अभी भी हमने बताया न्यूट्रॉन इज रेयरली गोइंग टू बी लेसर देन 1, लेसर देन प्रोटॉन। सो लेस का तो मतलब ही नहीं आता। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो exceeds 1, the atom is found to be, yes बेटे, unstable. The atom is found to be unstable. फॉर एग्जाम्पल, ये चीज मन में रखो, आप समझो न्यूट्रॉन ज्यादा होने का मतलब क्या है? द प्रोटॉन इज गोइंग टू बी मोर। प्रोटॉन ज्यादा होने का मतलब क्या है? न्यूक्लियस के अंदर लड़ाई ज्यादा होगी। अगर न्यूक्लियस के अंदर लड़ाई ज्यादा होगी तो दैट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल। यू ट्राई टू इमेजिन, एक किसान के 2 बेटे थे, 2 बच्चे थे, तो उसकी जायदाद 2 हिस्सों में बटेगी। उसी किसान के 10 बच्चे थे तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका जो घर है, that will be shared within a lots of people. अगर आपके घर के अंदर बहुत सारे मेहमान आ जाए तो क्या वहां पे स्टेबिलिटी रहेगी? नो। सो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो टेल्स अस अबाउट द स्टेबिलिटी। मार्क इट, दिमाग में रखो। The moment it is going to be greater than 1, which comes instability come. The instability come. For example, देखो, this is carbon 12-6. Beta, I want to hear from your side. How many neutrons are here? 6. 6. Very right. 6. How many protons are here? 6. 6. One. रोहित, 1 स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल होगा? उत्कर्ष स्टेबल। अब देखो, स्टेबल भगवान ने, आप अपने आप को महान मत समझिए। द नेचर, ऑलवेज यू विल लर्न नेचर 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 नेचर, राइट, फ्रॉम अ माइंड। तो दिस इज गोइंग टू बी 6. आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं बेटे? 8. वेरी राइट। और प्रोटॉन्स कितने हैं? 6. 6. What is the ratio?
oops, this is going to be unstable. Unstable. Do you understand? Let's write more. Use calculator. I have asked you to bring a calculator in today class. Uranium 23592. Calculate करके बताइए please. I don't mind. It is 235 minus 92 by 92. I'm waiting for your answer, bete. Yes, yes. So 1.55. 1.55. 115. 1.55. एक मिनट, I just want to verify myself. 235 minus So 1.55. 143 by 92. What is the ratio? अच्छा, आपने मुझे रेशियो बताया 1.55. 1.5. तो बोर्ड के ऊपर एटम A, एटम B और एटम C लिखा गया है, which is going to be stable. Do you understand? Yes. And Sir. B and C are going to be what? Unstable. Unstable का मतलब क्या होगा? They are going to be radioactive. They will decompose. That is known as death of the atom. I use this word. Everything which is going to come in this universe will die. Even this will die. The A will also die. But इसके जो मरने का टाइम होगा वो बहुत लंबा है. इतना है कि हम उसको आपको नहीं बताना चाहते. Maybe it will go after billions of years. Do you people understand, बेटे? So, आपकी डिक्शनरी में मधु, there has been an addition. Neutron proton ratio greater than 1 means what? Unstability. जैसे ही वो 1 करीब होगी तो वहां पे बच्चे क्या होने वाला है? The stability होगी. जैसे जैसे वो 1 से ज्यादा होगी तो unstability. Now, an interesting phenomenon. I'm going to tell you the theory behind beta decay. What is Sir, एक beta decay? डाउट है. हाँ, पूछो. सर, पूछो. सर अगर क्या कहते हैं, जो भी जिस एटम की भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 से ज्यादा होगी वो सारे रेडियो एक्टिव होंगे. यही तो बोला गया आपको. It is going to be unstable. उनकी लाइफ छोटी होगी. इवन आपने मेरे से ये पूछा, मैं तो ये भी कह रहा हूं इसका भी अंत तय है. But this is relatively stable as compared to this. Every atom of the whole periodic table is going to die sooner or later. But वो sooner 2 दिन 10 दिन नहीं होंगे. That will be running into करोड़ों साल, अरबों साल, billion, trillions of years will be happening. Is it clear? But जिनकी न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो is going to be greater than 1, it is going to die quickly as compared to another atoms. Shall we move ahead? तो न्यूट्रॉन्स तो रिपल्शन को कंट्रोल नहीं करते प्रोटॉन की. तो जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे बेटे उसी प्रोपोर्शन में न्यूट्रॉन भी तो ज्यादा होंगे. सर पर अगर न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो रिपल्शन ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे, फिर तो ज्यादा स्टेबल नहीं होना चाहिए. दैट इज एक ढंग है. तो आपके घर के अंदर खूब सारे मेहमान आ गए हैं तो कितनी देर तक वो जिंदा रहेंगे, कितनी देर तक वो लड़ेंगे नहीं. द एटम विल बी अनस्टेबल. तभी तो बेटे देखिए पेज नंबर 18 याद रखना. तभी तो आप देखेंगे आफ्टर यूरेनियम 92 ऑल आर सिंथेटिक, ऑल आर रेडियोएक्टिव. उससे पहले जो ब्लैक कलर से हैं दोज आर स्टेबल. स्टेबल का मतलब उनकी लाइफ लंबी है. समझ रहा? जैसे न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या बढ़ रहा है? बेसिकली द प्रोटॉन्स आर आल्सो इंक्रीजिंग एंड न्यूट्रॉन इज अ रेशियो दैट इज प्रोटॉन इज गोइंग टू बी वेरी हाई. ओके सर, दैट इज माय. तो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो होती है सर ये एटॉमिक नंबर के साथ इंक्रीज होती है? ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे तो उनमें रिपल्शन बढ़ेंगी तो न्यूट्रॉन्स आर गोइंग टू इंक्रीज. एंड दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑलवेज बराबर नहीं होते. जैसे जैसे आप आगे चलते जाए हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिकम्स ग्रेटर देन प्रोटॉन. जैसे जैसे आप प्रोटॉन में आगे बढ़ेंगे, ये तो शुरुआत में ही है प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन. आफ्टर दैट इट इज नेवर एवर गोइंग टू बी देयर. न्यूट्रॉन्स आर गोइंग टू बी इंक्रीजिंग. आप देखिए ना, आयरन में आपके पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स कितने हैं? 26. और जबकि जो छोटा एलिमेंट है जैसे हीलियम है
तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तकरीबन बराबर है। एनीवे बेटा प्लीज एक्सेप्ट इट, as you go further in periodic table the number of neutrons goes on increasing Sir, and doubt. neutron proton ratio is going to be the ratio or the मापदंड for stability। आगे चला जाए। हाँ जी, ये कौन बोला Sir, था डाउट? doubt है। कौन, नाम बताओ पहले। अमोद ने। हाँ बोलो। सर, एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या फर्क होता है? Where were you when we were discussing all this thing? Where were you? Atomic mass और atomic number में, what is atomic नहीं number? सर, एटॉमिक मास और मास नंबर में, सॉरी। अभी थोड़ा रुको, वो भी मैंने अभी बताया था तुम्हें कहीं पे। तो atomic mass is number of protons and neutron rounded off to nearest, कहाँ पे लिखा था ये? Nearest whole number is known as mass number. What is this? Atomic weight rounded off to nearest whole number is known as mass number. Is it clear? फिर सर एटॉमिक मास क्या हुआ? Atomic mass मैंने तो यूज ही नहीं किया, किसने यूज किया? नो, सो दैट इज समथिंग, आपके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट चले आ रहे हैं, उसको भी छोड़ दीजिए। ओके, देयर इज नो सच टर्म नोन एज एटॉमिक मास। बाकी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। दिस इज, यू हैव आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चन, सो आई एम आंसरिंग दैट वेरी सून। आई एम गोइंग टू ब्रिंग आइसोटोप्स, योर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आंसर्ड देयर सर। शैल वी मूव अहेड? अब प्लीज देखो, बीटा डिके, concentrate here. Beta decay, when neutron proton ratio exceeds 1. So no, I'm not creating these things, I'm telling you these are the facts, the signs, what happens. So bete, absorb the knowledge. This is flowing, the Ma Saraswati is coming toward you, accept it, right? When neutron proton ratio exceeds unity, the nucleus becomes what? Unstable. You have learned that. Let's move ahead. Now there is going to be no such question why neutron proton ratio exceeds 1. This is the observation, I have learned it, right? And I'm passing it to you. Lock kiya jaye, when neutron proton ratio exceeds 1, the nucleus becomes unstable. Then in the nucleus, the neutron changes into proton by emitting an electron. Then in the nucleus, the neutron changes into proton and electron. This proton, this electron is ejected, thrown right out of the nucleus at great speed. This is called beta particle. What is beta particle? When neutron proton ratio exceeds 1, nucleus becomes unstable. Then in the nucleus, the neutron converts into proton and electron. This electron is thrown out of the nucleus at great speed. This is called as beta particle. That means beta particles are nothing but, yes, electrons coming out of the nucleus. Watch here. So you understand carbon 14 6. Please, this has to be kept in mind when I'm moving further. Beta decay, what happens in beta decay? You copy this, I wait for you. You please copy on a piece of paper. Copy after the class also, but right now you should copy. Please copy this page. Keep yourself normally on the mute mode, right? So that your disturbance does not come forward. So when I ask you, then you unmute yourself.
सर इसमें हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही नॉट के साइन क्यों डाले हैं? ओ भाई, ये कौन बोला? सर अनुवंश। इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज के बेटे ऊपर क्या आता है? मास, और नीचे क्या आता है? चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत बहुत कम है, तो हम इस करके इलेक्ट्रॉन को 0 -1 और कभी कभी सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन है। ये इलेक्ट्रॉन का अभी आपको जो सिंबल नहीं बताया था, ऊपर क्या आता है? मास, नीचे क्या आता है? हाँ जी बेटे, चार्ज। तो हम कभी कभी इलेक्ट्रॉन को बेटा ऐसा लिख देते हैं। ये आपने कॉपी कर लिया ये पेज? Yes. So electron, I repeat बेटे, is represented as this. What does this 0 means? इसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम, 0 के बराबर ही होता है। तो हम ऊपर क्या लिख देते हैं बेटे? ये। जैसे प्रोटॉन को कैसे लिखेंगे हम? H11, राइट बेटे? अब प्लीज मेरी मदद करना, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मुझे उसका आंसर देना। इशिता कपूर, कैन यू टॉक विथ मी? Right, Ishita? Yes, sir. Ishita, Yes, sir. go very slow. No hurry, Vidya. Please tell me Yes, sir. how many neutrons are? 6. No, Vidya, 8. 14 8, minus. sorry, 8. So let us write, because there was a confusion. It is 8. Agreed? The mass number minus the proton is going to be the number of neutrons. Dear, what is proton here? 6. Very right. What is neutron proton here? 8/6. Does that mean stability? Unstable. Unstable. Agreed? Unstable. Right. Yes, sir. Now, have you written this part? In beta Yes, decay, one neutron converts into proton. तो बेटा न्यूट्रॉन Yes. क्या होंगे? कम होंगे कि ज्यादा होंगे? Sir, न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे। नहीं, न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे? बढ़ेंगे, कम होंगे? कम होंगे। यस। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या करेंगे? बढ़ेंगे, ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे एक ड्रामा होता है। व्हाट इज अ ड्रामा? न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अरे दैट इज अ बीटा डिके ना, आपको पिछले पेज पे समझाया था। यस सर। तो आप सोच के बताइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 के मुकाबले कम हो जाएंगे कि ज्यादा हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। वेरी राइट। तो 7 कर दूं? राइट, Yes, sir. बिकॉज 1 न्यूट्रॉन गया। और गुड़िया प्रोटॉन्स Yes, कितने sir. हो जाएंगे? सर ज्यादा हो जाएंगे, सो 9 सॉरी 7 6 के मुकाबले increases by 1 and neutron, हाँ जी गुड़िया, decreases by यस सर 7। रोल नंबर किसका पीरियोडिक टेबल में? 7 नाइट्रोजन। नीचे क्या लिखूं? प्रोटॉन। ऊपर क्या लिखूं? 14। मास। और साथ में क्या पैदा हुआ? एक इलेक्ट्रॉन। यस सर। See the transformation. What Mother Nature is doing, nobody understand. We are just trying to see, अच्छा ऐसे हुआ है, क्यों हुआ है? अभी तक हमारे पास कोई बेहतर आंसर नहीं है। And we want you people to grow and become a scientist. So you can bring us the answer to many most of the things we do not know still now. See गुड़िया, तो in beta decay, the C14 is converted to nitrogen 14. अब बिटिया यहाँ Yes, पे sir. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो चेक कर, कितना हो गया? 1 तो क्या ये स्टेबल है। स्टेबल? सी यस सर। दैट, मुझे नहीं पता, अभी समय आने पे सिखाऊंगा। Did you ever hear about radiocarbon dating in the previous years? यस सर। कोई फॉसिल जो हजारों साल पहले मर गया था, हम उसकी इस ढंग से एज पता कर लेते हैं, बट इट इज प्रीमेच्योर टू टेल यू हाउ।
because बेटे you have just started, आपने तो अभी साइंस का दूसरा बेसिकली लेक्चर लिया है, and there will be millions of these learning sessions which is going to make you a scientist. So right Yes, sir. now I just wanted to teach you, because there was a question coming from your mind, your side, said what is radioactivity? Radioactivity is a spontaneous emission of active radiation from an atom. और ऑफ कोर्स अगर मैं स्टेबल हूं तो मैं क्यों टूटूंगा, समझ आया ना? मैं तो तब जाऊंगा ना जब मेरे को कोई बीमारी है, वो बिल्डिंग तब गिरेगी ना जब वो कमजोर हुई है, तो वो एटम तब टूटेगा ना जब वो बीमार है। यहाँ पे बीमारी का मतलब हमने क्या चीज ली थी गुड़िया? न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। When neutron proton ratio exceeds 1, the atom is found to be unstable. It will try to become stable. And radioactivity is of how many types, son? 3 types. Beta particles. What are beta particles? These are flow of electron coming from the nucleus. Alpha particle, I have never taught you right now. These are nothing but helium ka nucleus. And gamma rays are electromagnetic waves. They will be discussed when the time comes. Then I gave you an example of A, stable, B or C, unstable nuclei दिखाए. You were taught a phenomena known as beta decay. When does beta decay happens? The neutron proton ratio exceeds 1. What happens during beta decay? One neutron converts into proton and electron. There will be a great scientist who will be known as Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg was a scientist जब हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, you should know that stories. तो Germany was on the verge of developing the nuclear bomb. So Heisenberg could have developed the nuclear bomb, but Heisenberg और जो हिटलर था, हिटलर was a dictator, ऑटोक्रेट था, तो इन्होंने हिटलर ने हाइजेनबर्ग की लेबोरेटरी में कोई ब्लास्ट हो जाता है, फेलियर्स आर पार्ट ऑफ साइंस, तो हिटलर ने हाइजेनबर्ग को बुलाया और उनको बहुत ज्यादा डांटा और उनको बदतमीजी से उनको कहा कि अब तुझे पैसा नहीं मिलेगा, उसको बाहर निकाल दिया। Germany was on the verge of developing nuclear bomb in 1939 or 40. Heisenberg was the scientist. ये सब आने वाले हैं। उधर से Einstein was a Jew. Einstein was thrown out of Germany by some reason. और आइंस्टाइन जी पहुंच जाते हैं अमेरिका। साइंटिस्ट को पता लग जाता है कि जो जर्मनी है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला है। अगर जर्मनी न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता तो पूरी दुनिया का नक्शा अलग होता। Germans are very very ahead in terms of science. Nobody can beat them even in the right district. So what happened? तो साइंटिस्ट ने आइंस्टाइन को कहा, आइंस्टाइन वाज द फिगर, फादर फिगर थे, कि आप रूजवेल्ट एक प्रेसिडेंट थे, आप उनको जाके कहो कि जर्मनी इज गोइंग टू डेवलप द न्यूक्लियर बॉम्ब। और जर्मन जो बाय नेचर थे, हिटलर जो था वो बहुत रूथलेस था, ही वाज क्रूअल, आप लोगों ने पढ़ा है, उसने बहुत लोगों को मारा, दैट वाज द बैड थिंग दे डिड इट। सो अगर जर्मन्स ने बना लिया, उन्होंने ब्रिटेन, उन्होंने फ्रांस, उन्होंने जापान, उन्होंने अमेरिका को खत्म कर देना है, तो अमेरिका शुड डेवलप दैट न्यूक्लियर बॉम्ब। Anyway, America also started that nuclear bomb, and क्योंकि जर्मन्स ने, हिटलर ने हाइजेनबर्ग को बेइज्जत किया था, तो अमेरिकन्स डेवलप्ड दैट न्यूक्लियर बॉम्ब इन 1945, एंड उसकी वजह से द वर्ल्ड वॉर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जापान के ऊपर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब डाले एंड द वर्ल्ड वॉर वाज स्टॉप्ड। But this is going to be given by Heisenberg uncertainty principle. You will learn in atomic structure why an electron cannot live in the nucleus. ये हम आपको समय आने पे कराएंगे। So this is basically interesting stories going simultaneously. Something is happening on your screen and something is happening behind your screen at that moment of history. The nuclear bomb formation has started. It has all started from the structure of an atom. धीरे धीरे करके देखो ये कहां पे कहां ले जाएगा। So you will be learning more. Anyway, वापस आते हैं बीटा डिके के अंदर। So बेटा, everybody understand what is beta decay? The neutron converts into what? Protons and the electron, and that is going to give rise to the beta particle that is going to be thrown out of the nucleus, and that is going to be the case. Now आपको एक एग्जाम्पल दिखाया गया, दिस इज वन एग्जाम्पल आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल।
where I'm proving beta decay and I'm telling you how does an unstable nucleus becomes the stable nucleus. It is going to be helping you. Let's move ahead to our वापस discussion. चलो जी, तो गायकी ये क्वेश्चन कराएगा अपने साथ बेटे? यस गायकी. हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? इसको गुड़िया A बोल लेते हैं, इसको B बोल लेते हैं, C, D, E. You got it, son? Yes, sir. So help me dear if I commit a mistake, right? I'm teaching beautiful minds. So Dolly, A में how many neutrons are going to be there? 7. You are right. 13 minus 6 is equal to 7. And of course, proton are going to be how much? 6. Right? You can mute yourself, Devanshi. Devanshi, few I'm doing, few I'm going to give you as a homework video. See video. Devanshi, can you hear? Yes, sir. How many neutron, Dolly, this is going to have? I call my daughters as Dolly, right? So don't mind video. So what is proton, video? 12. Very right. Good. Tanveer, can you unmute yourself? This is 88, 38 strontium. Right, Bhuller? So, Bhuller, Yes, sir. कितने न्यूट्रॉन्स होंगे बच्चे? 50. Very good. और सुनो, ये भुल्लर, Yes. आपको मैं Yes, नजर आ रहा हूँ? Yes, sir. देख, तेरे पास 2 साल हैं, तुम्हारे पास एक ही टारगेट है. You have to defeat me in terms of intellectual level. That is known as growth. समझ आ रहा है तुझे? Yes, sir. ये मेरे को अभी तक आपको थोड़ी सी ज्यादा केमिस्ट्री आती है. In 2 years, I will transfer all this data to you. After 2 years, you should be 100 times smarter than me. So your competition is with me in a positive way, right? So Yes. just try to understand, just try to learn from me and develop your intellect. समझ आएगा बेटे? Okay, sir. तो डॉली तेरे को सिर्फ मेरे से रेस लगानी है और किसी से रेस नहीं लगानी, और मैं बहुत अच्छा कंपटीशन दूंगा तेरे को. ठीक? तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 3. एक वैसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ गुड़िया, इन सब में क्या प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स हैं? यस और नो में जवाब देना. इन सब में क्या प्रोटॉन्स और यस, वेरी राइट. दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, इन सब में क्या न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन के बराबर हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं? There is So can you repeat? Yes, many times. Listen to it, right, son? In all the 5 examples, are neutron always equal to protons, or sometimes they are more than protons? Sometimes they are more than protons. That's the case with you. Again, repetition. What is the word, or I'm sorry, the alphabet 6, a numerical number, 8, 12, 26, 38 indicate here? Protons. Very right. Protons. और टेक्निकली क्या बोलेगा? Atomic number. Very right. दोबारा बेटिया, you're representing your class. What does the numerical value written on the superscript of the symbol means? Mass number, proton and neutron. अमोदनी, अभी आपका आंसर करूंगा बेटे, मास नंबर और वेट नंबर में अभी जा रहा हूं, बस थोड़े समय के लिए. चल तन्वीर, आगे चलें गुड़िया? Yes, sir. Has been solved. Yes. You can mute yourself, Dolly. So that is going to be the nucleus, that is the Z, that is the A, that is the proton, and that is the neutron. I hope you can check it. If there is some mistake typing error, you are smart enough, आप संभाल लेंगे. Right. अमोदनी, अब आपका आंसर आएगा बेटा. आपने जो पूछा था ना वेट और नंबर में, now I will be illustrating it in detail. Amodini, you can unmute.
Yes, sir. Isotopes बेटे, isotopes. Not very important. They were first identified by Soddy. Those who are from medical background, they are trained for developing एक photographic memory. उनकी तो बहुत ज्यादा चाहिए होती है क्योंकि हम आपको नॉलेज से नला देंगे, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है isotopes were discovered by whom. बाकी नॉन मेडिकल वालों के लिए ये ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती. Thomson and Aston, साइंटिस्ट के नाम है, later proved that most of the element have isotopes. What are isotopes? Atoms of same element. When you mean same element, Dolly, the number of protons in an element should be same, because proton and electron define their the reactivity, the chemical property. Having same atomic number but different mass number due to different number of neutrons are called isotopes, right? Amodini, I will ask you in few minutes again. Atoms Yes. of same element जिनका protons और electron तो same है, but क्या different है बेटे? Neutrons. उनको क्या बोलते हैं? Isotopes. Again गुड़िया, you are not creating, I am not creating. We have discovered something and we are just classifying them. We are studying their property. We will be using them for our benefit. Like कई isotopes radioactive होंगे, like potassium हो गया, like तो इनको हम कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज करेंगे, उनको हम एनर्जी निकालने में यूज करेंगे, जैसे यूरेनियम को हम करेंगे. Is it clear, sir? Yes. Isotopes have same chemical properties. Why, dear? Because इसमें protons और electrons क्या होते हैं? Same. Equal. But they have different physical properties. What are physical properties? Boiling point, melting point, etc. Diffusion, boiling point, etc. You know, every single word will be dealt in different chapter. Dolly. Diffusion, gaseous state में करूँगा, nuclear bomb कैसे बनाते हैं, right? That you will be learning within few months. So that is going to be the new type of chemistry which is coming to you. Your knowledge is increasing, dear. Hydrogen exists in, I will write on the next page also, 3 isotopes, 1, 1, 1. नीचे क्या लिखा है? Number of protons. ऊपर क्या लिखा है? Protons plus neutrons. 2 and 3. 1, 2, 3. हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप देख पा रहे हैं आप? 1, 2, 3. ऑक्सीजन के, don't memorize my son, right? Oxygen, see, सब में number of protons are same, but what is different? The number of neutrons are going to be different. That is known as, Dolly, the isotope. Please help me. It is known as revision, right? How much you have understood. What are isotopes, Vide? Which have yep, which follow. have same atomic number but different atomic mass, that is different number of protons, are called isotopes. बिल्कुल सही. Different neutrons. एक एग्जांपल लिखते हैं, right? It is not a test, it is a repetition, right? This and this, right? This is known as, maybe you have already known, प्रोशियम. आप इसको हाइड्रोजन बोलते हो, जो कि हम नॉर्मल देखते हैं, क्योंकि 100 एटम अगर हमें मिलते हैं तो उसमें से मे बी 99.98%, डोंट मेमोराइज, इज गोइंग टू बी व्हाट? प्रोशियम, राइट सर? Yes, This sir. second is known as deuterium or deuterium, your choice, whatever you call it, right? Deuterium. And this is known as today tritium or tritium, आपकी मर्जी, deuterium or tritium. Now bete, check it, go slow, right? No hurry, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, ठीक? तो how many protons in prosium? 1. Is it okay? Yes, sir. How many electrons? 1. And how many neutrons? 0, 0, 1 and 2. Excellent. You have understood that isotopes have different number of neutrons. Again, who is a creator? जब भी ये फैक्ट्री में एटम्स बने होंगे, कुछ तो सोचा होगा, हमें नहीं पता है, भगवान ने कुछ तो सोचा होगा. यू कॉल इट भगवान, यू कॉल इट नेचर. भगवान ने कुछ तो सोचा होगा, तो उन्होंने हाइड्रोजन के हमारे पास 3 सैंपल भेजे हैं.
सब में प्रोटॉन इज द सेम, राइट, बट सब में द neutrons have been different. There is very rare example where neutrons are going to be lesser than that. Is it clear, sir? Now Yes, sir. you try to repeat this, right? Agrim, jump in. Agrim, jump in. Agrim, ye 2, 1 and 3. These are isotopes. Agrim, a question Yes, is sir. coming today. I can write it as 1, I can write it as 3, right? What does that mean? Yes. They have different hanji mass. Mass number. अब मैं बेटे लाल पेन से कुछ लिखना चाहूंगा, ठीक? आप देखना ये जो ग्रीन पेन है और रेड पेन में एक गड़बड़ी है। अगर मैं प्रोशियम को ऐसे लिखूं, ड्यूटेरियम को ऐसे लिखूं, ट्राइशियम को ऐसा लिखूं, क्या ये सिमिलर रिप्रेजेंटेशन नहीं आ गई है? Yes, sir. तो which representation for isotopes you will take? A, B, C में से कोई दो ठीक है। A and B are B. correct, है ना? दोनों Yes, डिफरेंशिएट sir. कर रहे हैं। This is not correct way of representation. Do you understand it, son? जैसे दोबारा Yes, देख, sir. जैसे दोबारा देख। अब मैं बोर्ड पे यूरेनियम 235 और 238 लिखूंगा। क्या ये दोनों सेम एलिमेंट है? Yes, they are same Yes, element, sir. but ये क्या है? Different isotopes. Isotopes. Isotopes का क्या different होता है? A Mass number. different. You're right. A is the mass number बेटे। अगर मैं इनको ऐसे लिखूंगा, right? This is A representation, this is B representation. This is going to be even better. Yes, sir. But 92 तो कॉमन है ना? अब अगर मैं Yes. C लिखूंगा, क्या मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट कर पा रहा हूं? No. No, sir. So isotopes के लिए you can use either of that. अब एक बात बताइए, A और B में से आपको कौन सी ज्यादा सिंपलर लगी है? B. A, क्योंकि 92 तो ऑब्वियस है ना? Yes, sir. 92 तो ऑब्वियस है, तो हम ह्यूमन बीइंग्स छोटा रास्ता करेंगे। एज अ केमिस्ट तुम्हें बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, तो हम छोटा रास्ता लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन देखो, इधर आई राइट इट लाइक दिस और आई राइट इट 16, हाँ जी बेटे 17 और 18 चलेगा ना? Yes, sir. डू यू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड? Yes. ये Yes, sir. क्वेश्चन, एवरीबॉडी प्लीज। Symbol 7935 bromine and 79 bromine can be written, whereas symbol 3579 bromine and 35 bromine are not acceptable. इसी को लिखा था ना हमने, A and B, right? So this is not acceptable. इसमें क्या गलती है? 3579 में गलती क्या है? मैंने ऊपर लिखा हुआ है Z, नीचे लिखा हुआ है A। ऐसा तो मैंने आपको करवाया नहीं। मैंने तो आपको क्या करवाया था? मैंने आपको करवाया था व्हाट इज द करेक्ट, ऊपर लिखना है A, नीचे लिखना है Z। So do you understand why this is incorrect? Sir. अरे नहीं यार, करवाया नहीं था, शुरुआत ही हमने वही की थी। ऊपर क्या लिखना है? द मास नंबर, और Mass नीचे क्या number. लिखना है? एटॉमिक नंबर। And why this is not correct? Because its mass number is not fixed depending upon the isotope. This does not represent the isotope. What represent? You have to indicate what? Read it and tell me. It is necessary to indicate mass number, Haji bete, for isotope. Why? Because that is different. Do you understand it? Can I move further? So it is always better to write symbol with mass number for representation of isotopes. A लिखने से Z लिखने से कोई फर्क नहीं होगा। Yes. तो रोहित, let's practice this question.
write the complete symbol for the atom with the given atomic number. Rohit, I can help you. I can help you. So bete, the A is equal to, I'm sorry, Z is equal to 17 जो symbol होता है वो क्लोरीन का होता है, और जो Z is equal to 92 होता है ना रोहित, that is going to be यूरेनियम का होता है. Z is equal to 4 बेटे हीलियम का होता है. So that I am helping you. Rohit, are you able to listen me? Yes, रोहित. तो चलिए गरिमा, सर will आपने you? थर्ड अब अभी तो मैंने किया ही नहीं बेटे, अब शुरू करने लगा हूँ. कौन बोल रहा है मेरे साथ? तो बोरोन ही होता सर हीलियम. यस सर, वो हीलियम गलती नहीं लिख दिया सर बेरिलियम होगा. क्योंकि सर उसका मास सर नंबर Z4 is 9 बेरिलियम. बेरिलियम. तो मैंने बोरोन. तो हाँ, मैंने तो बेरिलियम लिखा था, ये रोहित ने हीलियम करवाया था पक्का. रोहित ऐसे मत किया करेगा, कितनी बार पीरियोडिक टेबल दिखा रहा हूँ तेरे को. गुड गुड, तो दैट्स गुड. बोरोन ही आएगा. Hydrogen, it is helium, lithium, beryllium, boron, carbon. This is 4 beta, this is 5, this is 6, nitrogen is 7. Right? Chalo ji. Now, who will do this question with me? Please come ahead. गरिमा आगे आएगी? गरिमा कोशिश करेगी? Yes, sir. Z17 के लिए Yes, symbol sir. क्या है? 17. नीचे 37 लिखो क्या 35 लिखो? नीचे 17 लिखो और ऊपर 35 लिखो. Chlorine. सेकंड बताइए बेटे. Sir, यहाँ पे 17. यू राइट. 35. सेकंड में गरिमा 92 के लिए सिंबल मैंने आपको बता दिया है, वो आपको भी पता लग जाएगा धीरे धीरे. क्या लिखो? यूरेनियम. एंड इट इज गोइंग टू बी. Sir, 92 नीचे और 233 ऊपर. बिल्कुल सही बोल रहा है. अब थर्ड को करते हैं डॉली. हीलियम और बेरिलियम. बेरिलियम पता नहीं वो मेरे दिमाग से ना ऐसा निकल गया. दैट इज गोइंग टू बेरिलियम. ऊपर क्या लिखो? 9. नीचे क्या लिखो? 4. You understand? That is the way we should be. Yes, sir. Right. And you should write ऊपर क्या चीज? The mass number. नीचे क्या? This has to be written. Shall we move ahead bete? So I think we did this question. We did this question. अभी अभी हमने ये काम कर लिया था. अब देखो होता क्या है. नेचर में जब उन्होंने क्लोरीन को बनाया 35 और 37. Amodani, that is your question, Bidya. I said just give me time, है ना? So we have arrived. What Yes, does sir. 35 means? Protons and neutron is going to be equal to 35. What is proton plus neutron is equal to 37? Basically, Dolly, this is the number. This is the number of proton and neutron. The proton and neutron rounded off to nearest whole number is called atomic mass. और Mass. है ना, मेरे पास मास और वेट में कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं है, तो बेटे मैं कभी कभी मास की जगह पे वेट भी यूज कर दूंगा. ठीक. असल Yes, में sir. दैट इज नॉट 35, क्योंकि से मास ऑफ प्रोटॉन वो क्या करेगा? प्रोटॉन किस में है? 7 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू क्या करेगा डॉली? 18. That is 18. going to be something. यहाँ पे आएगा ना 34.95 या 35 point something. So that is rounded off to this. अब इसका मास, एटॉमिक मास कितना लिया है? 35. इसका है 37. बट जब आप क्लोरीन देखने जाएंगे आपको तो से हर 100 एटम में 75% ये मिलेगा और 25% ये लिखेगा. तो हम इनका जो मास लेंगे बेटे वो हमेशा क्या करते हैं? एवरेज. राइट. हाउ डू यू डू द एवरेज? 35 वाले कितने एटम्स हैं हर 100 में? 75. 75. 37 वाले कितने हैं गुड़िया?
35 25. divided by 100, that is going to be 35.5. Please answer to my question, right? गलतियां Yes, करना sir. और क्वेश्चन पूछना जो नहीं समझ आया. Chlorine has how many isotopes? 2. 2. What is the mass of each? 35 and 37. Yes, sir. Which mass we matlab you, me, all will use 35 or 37? 35. No, we will use average. Okay, sir. We are a team of 11 people. हम क्रिकेट खेलने जाते हैं. You score more, I score less. He bat better, he bat poor, he field better, he or she bowl better, he or she bowl bad. Then एक एक करके जीतेगा कि हमारा एवरेज रिजल्ट आएगा. Average. You understand? Again repeat video, right? This is a question for all of you. I'm asking you certain question. What does 35 means? Is it protons plus neutron? ध्यान से सुनना. What does 35 mean? Is it proton and neutron number, or it is total mass of proton and neutron rounded off to nearest whole number? Total mass of neutrons and protons. Of neutron and proton rounded up. That's right. That's the right answer. बिल्कुल सही. Now, in nature, chlorine exists as 2 two isotopes. isotopes. Will you take 35? Will you take 37? Or will you take average? Average. 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 For example, थोड़े समय में अगर हम क्लोरीन को देखने जाएं, डेफिनेशन डालेगी ना इसकी आइसोटोप्स की, ये डालेगी यहाँ. So what will be the weight of oxygen you will be taking actually? Will it be 16, 17 or 18? Or it will be average of these three? Yes, sir. It will be the average of the 3. Yes. So there comes this. You can mute yourself, Lalit. So isotopic abundance. Isotopic abundance. It is the percentage of isotope in naturally occurring element. Atomic weight is in fraction because of isotope, as we use the average mass of various isotopes of given element as the atomic weight of the said element. For example, we did it few minutes earlier. Isotopic abundance of chlorine 35 and chlorine 37 is 3:1, or you can call it 75:25. So hence the average atomic weight you will find everywhere is going to be 35.5. I will introduce this. AMU is the reference standard. AMU is a reference standard. हाइड्रोजन का वेट 1 लिया जाता है, हीलियम का वेट 4 लिया जाता है, नाइट्रोजन का वेट 14 लिया जाता है, इंडिकेटिंग हाउ मेनी टाइम्स इट इज हेवियर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन. ये भी समय आने पे कराया जाएगा. Do you people understand that because of isotopes, right, we use what? Average atomic mass. What is average atomic mass? The mass of an isotope plus mass of another isotope multiplied by their respective percentage divided by 100 or fraction. The question is asked in this way. The question is asked in this way. Karamjot, will you try to talk with me बेटे? Karamjot, बात करेंगे आप? Yes, Karamjot. Yes, sir. Welcome बेटे. तो Karamjot, इसको मिलके करते हैं बच्चे. Calculate the atomic mass average of chlorine using the following data. Right? So, Yes, sir. this is the exact mass. हमने इसको राउंड ऑफ करके कितनी यूज किया था? 35. बट अभी उसने जो एग्जैक्ट दिया है ना करमजोत, आप वो लेंगे. सो बेटे देख 34.969 into 35.77 प्लस कैलकुलेटर यूज करना है बच्चों, into 24.23. करमजोत डिवाइडेड बाय क्या करूं बेटे? Sir.
100, 100 sir. क्योंकि इन दोनों को टोटल करके कितना बनता है 100. That is this into this plus this into this divided by 100. Use calculator please. I have my answer, but I want you people to do that. 35.45. 35.45. 35.4. सर ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे इतनी बड़ी? कैलकुलेटर से, राइट? जो रास्ता मैं सिखाऊंगा अभी वो ऑब्जेक्टिव में सिखाएंगे, कैलकुलेटर से बेटे. सो यू वर गिवन अ वार्निंग सुबह के देयर इज नो अदर मेथड, राइट? समझ गया बच्चे? Yes sir. एवरीवन क्लियर? शैल वी मूव अहेड सिद्धार्थ? Yes आगे sir. चलते हैं, राइट? उत्कर्ष भैया अगला क्वेश्चन आपसे करवाते हैं. भाई कैलकुलेटर यूज करना, डोंट यूज मेंटल अर्थमेटिक हियर. We do not want you to be wasting your energy in something which I don't need it. तो अपनी एनर्जी बेटे सही डायरेक्शन में लगाएंगे. उत्कर्ष सुन पा रहा है बेटे? Yes sir. उत्कर्ष कैलकुलेटर है बेटा, फोन में यूज कर सकता नहीं है. सर, अच्छा फोन नहीं है? में कर लेते. हाँ चलो वो एक ही बात है बेटा, एक ही बात है. तो उत्कर्ष चेक साथ साथ में करते रहेंगे. उसने कहा use the data to calculate the molar mass of naturally occurring argon isotopes. जो 36 वाला है उसकी एग्जैक्ट मास इतना है बेटे और नेचर में इतनी परसेंटेज है. उत्कर्ष समझ पा रहा है? 38 इतना एग्जैक्ट है. देखो ना, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम 38 लेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 36 लेंगे जो अमोदनी ने पूछा था. एंड दिस इज गोइंग टू बी टेकन एज 40 एवरेज मास. बेटे मेरी मदद करना अगर मैं कहीं गलती करूं, है ना? हम स्लो चलेंगे. 9655 राइट बेटा into 0.337 plus 0.063 into, check it बेटे, 37.96272. You have no other option than to use the calculator. एक अच्छे साइंटिस्ट के पास हमें आपकी ये चिंता नहीं है कि आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. हमें आपसे ये चिंता है क्या आप हमें सही रिजल्ट दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो. सो कैलकुलेटर इज नॉट एन इशू, अंडरस्टैंडिंग इज एन इशू. यस उत्कर्ष, नीचे क्या रखूं बेटे? 100. यूज कैलकुलेटर, नो अदर ऑप्शन एग्जिस्ट. क्या आपने कभी सोचा था कि केमिस्ट्री वैसी होगी जो 10th तक रट्टे मार रहे थे? नहीं सर. और इंटरेस्टिंग, केमिस्ट्री आपकी लाइफ को छू के जाएगी. और मैं बता रहा हूँ, आप में से जो फ्रीक्वेंसी में मेरे साथ टच है, केमिस्ट्री विद बायोलॉजी, you will be the richest person and you can serve the humanity the highest. दो बंदे समाज के लिए बहुत योगदान करेंगे. एक होगा फिजिसिस्ट और एक होगा केमिस्ट with the knowledge of biology. For example, आज की प्रॉब्लम देख लो. Whoever has the knowledge of chemistry with the knowledge of biology, he or she will be the great scientist. दूसरी तरफ से physicist, whoever will discover nuclear fusion reactor, whoever will tell us that we can travel with the speed greater than speed of light, वो अमर होंगे और वो पता नहीं क्या करके जाएंगे. वो शायद भगवान ने अपने बीच में, हमारे बीच में कोई ऐसे बंदे भेजेंगे. कैलकुलेटर करो बेटे. सर 39.94. 39.9476776. अरे वाह, इतना ही आंसर आ रहा है. 34.948. मैंने चोरी किया है बेटे, है ना? सर 39. 39. ओके, सॉरी गुड, सॉरी. इसको देखो 9 कर दिया. 9 ही तो लिखा था यार, क्या बात करता. ठीक है, that has been written here. राइट बच्चों, आगे जा सकते हैं मेरे प्यारे से बच्चों. साक्षी कैसा है? साक्षी बात नहीं करता है. आप लोगों को किसी को नहीं दिखता है कि क्लास में कौन बैठा हुआ है, तो आपके लिए तो सिर्फ मैं हूं, है ना?
आपको किसी को पता नहीं लगता ना कि क्लास में कौन कौन है, वो मैंने सारी सेटिंग भी मेरे पास रखी हुई है। तो यस, आगे चलें बेटिया। अमोदनी, कुछ कुछ समझ आया जो तुमने पूछा था? Yes, sir. आदित्य पाठक मेरे से बात करेंगे आप? यस पाठक, बात करेंगे? Yes. पाठक, that will be great if we are able to solve this question, है ना? That is the ultimate level I will be taking you to, IIT IIT JEE. अरे ये क्वेश्चन कर लिया तो हमारा मतलब आज का दिन सफल हो गया ना? Yes, sir. Do it. Given that the abundance of बोलन कैलकुलेटर करो, म्यूट करो, प्लीज डू इट। Sir, mass of the element. ये ऊपर क्या लिखा है अंकल? Sir, mass number. ये स्मार्टनेस होती है मेरे बच्चे, अपने आप को हालात के मुताबिक ट्विस्ट कर जाओ। अगर ये नहीं दिया तो तू क्या लेगा बेटा? 36 लेगा ना? नहीं दिया तो 13 लेगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए उसने आपको क्या दिया है, 54, 56 and 57। 26 लेंगे नीचे। ये वाला तो चुप, अभी कोई क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं बोलेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा। ऑल ऑफ यू आर ऑन द म्यूट मोड। Why? Because I want you to handle the question. आप लोग सोच रहे होंगे कि कल को आपने डॉक्टर बनना है ना? आपने डॉक्टर बनना है और आपने कार्डियोलॉजिस्ट बनना है और आपकी अर्निंग होगी 2 करोड़ 3 करोड़ साल की। And I'm telling you a future where you will be earning. Yes, I'm not joking. So there are person who are earning 2 crore, 3 crore a day. And at the same time, they are doing so much for humanity that they are respected. So I wish you be like that. Earning will happen, but Sir, answer is B part. अभी देखते हैं बेटे, हर कोई बंदा करे। अभी देखता हूँ। B. B बीटा, राइट? अभी देखो 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 देखो। Few more answer. Yes भाई। मेरी महिला शक्ति, अमोदनी, Sir, B. अनन्या, बी, अरोड़ा, अन्या, क्या आंसर है बेटे? देवांशी, गारिमा, जसलीन, Sir, B. अरे बीटा ही तो आंसर है। समझ आया? 54 into 5, 56 into 90, 57 into 5, right son? And that is going to be 55.95. So Amodini, this is an answer to your question, Budia. What is this, Budia? Average mass of what? Isotope. And Amodini, Yes, what does this 54 matlab? It is bolo bolo mass mass of proton and mass of neutron rounded off to nearest whole number. You understand बेटिया? उस वक्त मैं Yes. आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहा था, तो अब मैं आपको कर पा रहा हूँ। तो अमोदनी, it's a repetition बेटिया। Does 54 means proton and neutron? No, sir. Repeat. What does it mean? It is the It means the mass of proton and mass of neutron, which is rounded off to the nearest whole number. Yeah. I hope your question has been answered. हम उसको बोलते mass number हैं, तो it seems like it is number, but it is actually the गुड़िया the mass of total protons, the mass of neutron rounded off to nearest whole number. And Mr. Einstein will tell that this mass is going to decrease and that will be converted into E is equal to mc square, and that is going to result into something new. Yeah. बोर्ड के ऊपर एक नई चीज आई है, isobars. Isobars, everything has to be copied down. You people know, जैसे ही क्लास खत्म होगी आपके पास ये सारी फोन के ऊपर आ जाएगी, रिकॉर्डिंग 2-2.5 घंटे में आएगी। Isobars. तो कदम, what were isotopes गुड़िया? Sir, atoms having the same atomic number with different mass number. Good. डोली अब isobar को देख। Atomic atom ये गलती होगी, atom of different element, क्योंकि बढ़िया अब आपके जो प्रोटॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिफरेंट होंगे। प्रोटॉन्स किसको इंडिकेट करता है? Z।
but the same mass number, right? But different atomic number are called as isobars. For example, कदम लीजिए, आर्गन का मास 40 है, कैल्शियम का मास 50 है, atomic number is going to be different, and hence these are going to be called as their isobars. And see this example, oxygen is 8, 9 is fluorine. Of course नीचे वाला different है तो symbol तो different होगा ही ना, and their mass is same. That is going to be known as isobars. Isobars possess different protons, electrons and neutrons. Isotope में सिर्फ क्या different होता था कदम? Different neutrons होते थे. Isotopes में different neutrons होते थे, same Z. इसमें सब कुछ different होता है. And definitely they will have different physical and chemical properties. Page number 40 याद रखना, वापस आऊंगा, right? अभी वापस आता हूँ, तो कुछ कारण है, 40 नंबर याद रखना गुड़िया. अभी अमोदनी या गायक किसी ने आपने मेरे साथ ये करवाया था, है ना? तो डली एक बात था, कार्बन 14, कार्बन 16 and nitrogen 14 and 7 are isotopes or isobars? Isobars. Very good. अब दोस्तों, why I did this question? Because the question may be asked now, during beta decay, what are produced? Isotopes, isobars, both, none. Your answer will be Dasan. Isobars. Isobars are going to be produced. ठीक है बेटे, आप कर सकते हैं. आइसोबार्स, ये क्लास के बाद अपने नोट्स बनाने अपने हाथ में, जब आप अपने हाथ में बनाएंगे तो आपको समझ आएगा. राइट, जैस्मिन, विल यू लाइक टू टॉक विद मी? नमन से बात नहीं हुई. नमन, चलिए बात करते हैं बेटे. आइसोटोन्स, atoms of different elements having different atomic number, different mass number. सिर्फ एक चीज याद रखो, having same number of neutrons are called isotones. What are isotones? Which have same neutrons. For example बेटे, ये पहले वाला केस देखो. This is nitrogen 17, oxygen 18 and fluorine is 19 and 9. Number of neutron minus proton, sorry, number of neutrons की बात कर रहे हैं. Neutrons 17 minus 7, 18 minus 8, 19 minus 9, कितने आ गए? 10. These are going to be known as isotones. Clear? Check these. This is going to be neutron is 30 minus 14. It is 31 minus 15. It is 32 minus 16. Isn't it equal to 16? So they are going to be known as what? Isotones. Is it clear, son? आगे चल सकते हैं. Isoelectronic. Isoelectronic नाम से ही पता लगता है. The group of atoms or ions having same number of electrons are known as isoelectronic. See, एक एक करके करते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि एक पेज पे ज्यादा मत रहे. एक को देखो, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 9, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, मास नंबर. नियॉन इज गोइंग टू बी व्हाट? 10. मैग्नीशियम इज 12. अगर एक नेगेटिव कर दूं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 9 plus 1. If I put a positive, -1. Neon has no sign, 10. अगर इसके ऊपर 2 डाल दूं तो ये क्या हो जाएंगे? 10. So this is going to be one isoelectronic species. Do you understand, bede? See the next one. So Sir, 12. कहाँ पे बेटिया? सर 12 में से 2 माइनस नहीं होगा? 12 minus 2 होगा सर. मैंने 2 ही तो लिखा था, कैसी बातें कर रहे हो? 2 ही तो था और माइनस ही तो किया है, कैसे हो गया?
चलो थैंक यू बेटिया। चल बी को देखे। अब सुनो बेटे, तो ये आगे भी चलता रहेगा, है ना, ये जोक मेरा बड़ा पीजे है। तो प्लीज अब बी को आप कैलकुलेट करें। यस, क्लोरीन के पास होते हैं 17, आर्गन इज 18, कैल्शियम इज 20, राइट। -1 का मतलब, नाउ आई विल बी एक्स्ट्रा केयरफुल, आर्गन इज 18, कैल्शियम इज गोइंग टू बी -2। तो बेटे ये क्या हो गया, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया ना। ठीक है बच्चों, आदित्य सी पे चले, आदित्य सी पे चले। तो लेट अस सी दिस पार्ट। सुनो, मीथेन में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, उसका रोल नंबर 6। हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, और कितने हाइड्रोजन है, 4। सना अमोनिया के लिए कैलकुलेट कराएं। नाइट्रोजन इज, यस सर, नाइट्रोजन इज डॉली 7। नहीं आता ना, अभी मेरे से पूछ लो, क्योंकि आप याद होंगे। तो यू कैन आस्क यस सर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, यू शुड आस्क मी। सो नाइट्रोजन इज 7, each hydrogen gives 1 electron. How many? 10. Don't 10. hesitate, ask the question. दोनों हाइड्रोजन मिला के 2 और यस 8, ऑक्सीजन रोल नंबर 10, 10, HF, H is 1, 1, fluorine is 9, मिला के कितना बन 9, गया, 10. राइट। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर, अब डी करते हैं, डी। रोहित, विल यू ट्राई विथ मी? Rohit, you can ask any question. Oxygen is 8, one fluorine has 9, another fluorine has 9. Rohit, this is going to be 26, bacha. Chlorine has 17, oxygen has 8 plus 1. So check it, 26. Rohit, I'm working here. Carbon has 6, you have 2 carbon बेटे, राइट। ये समझ आया, माइनस एक नेगेटिव था ना, उसकी वजह से। हाइड्रोजन हैज 5, ऑक्सीजन हैज 8, 17, and this is going to be 26. Are you able to understand the isoelectronic? रोहित समझ पा रहा है, राइट? मधु, shall we move ahead बेटे? Isoelectronic. The next one, the isosters. Isosters, the molecules having same number of atoms, same electrons and same structure. Structure के लिए you will have to wait a lot. Chemical bonding में आपको इनके structure सिखाए जाएंगे. Right now I'm focusing on the first part with it. The first part, CO, cyanide and N2. How many atoms you have? 1 and 1. How many atoms you have? How many atoms you have? 2. How many electrons you have? 6 and 8. You understand, oxygen has 8. This is 6. Nitrogen is 7. सना एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आया, प्लस 1. 7 plus 7 is equal to 14. What are isosters? Same number of atoms and same number of electrons are going to be called as what? The isosters. Let's see this one. Carbon dioxide में बेटे कितने atoms हैं? Tell me. I want to hear from you. 3. बिल्कुल सही। N2O में कितने atoms हैं? 3.
कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन is 6, oxygen is 8 and 8. How many electron? 22. Hydrogen has 7 and 7. Oxygen has 8. How many electrons bete? 6. So can you tell me, Karamjot, what is isosters? पढ़ के बताओ. Isosters are species Same which number have of atoms, same electrons and same structure. सेम स्ट्रक्चर. बेटे बेशक अभी थोड़ा सा पोस्टपोन कर देना है ना, क्योंकि मैंने अभी आपको करवाया नहीं है. तो Yes, सेम sir. स्ट्रक्चर. आप दो चीजों को याद रखना. बिल्कुल सही बोला आपने. नंबर ऑफ Same एटम से atoms and same और electrons. इलेक्ट्रॉन से. गुड करमजोत. करमजोत मेरे साथ रहना. ये करते हैं बेटे. Yes, sir. आइसोटोपिक नंबर. इसमें काफी चीजें ना ये पता लग रही हैं. Isotopic number is difference in number of neutron and protons in an atom. That is known as isotopic number. What is isotopic number? बोलो पढ़ के बताओ. Neutron. Difference in number of neutron and number of protons in an atom. इसके नंबर मुझे पता. इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 17 minus 8. 9. गुड. इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 8. सो इसका आइसोटोपिक नंबर कितना आ गया? 1. And why I'm doing it? Because I was supposed to tell you isodiaphers. What are isodiaphers? Which have same isotopic number. Repetition. No. What is isotopic number? Neutron minus proton number is called the isotopic number. मैंने इसको ना अगले पेज पे ले गया हूं बच्चे. फॉर एग्जाम्पल इनको चेक करते हैं. ठीक, पहले दो को. दिस इज अ पेयर. See 11 5 boron, 13 6 carbon. Can you make out बेटा इसमें number of electron 6 है? Yes. Can you make out इसमें electron 7 है नीचे वाले में? Yes. 13. Yes, sir. प्रोटॉन 5 नजर आ रहा है और प्रोटॉन Yes, 6 नजर आ रहा है. तो न्यूट्रॉन माइनस Yes, sir. प्रोटॉन is going to be 1. Do you understand? 1. Can I Yes, give sir. as a homework to you? कर सकते हैं? Yes, sir. तो मैं क्वेश्चंस तो बहुत सारे लेके आया था. तो अभी आप मुझे ये मेरे साथ कराएं बेटे. This will be the last question for this day, है ना? I know you people are tired, so now you should be buck up. Sing. Which of the following are isoelectronic species? बेटा धीरे धीरे करें. अभी के लिए मेरे से सोडियम का Z is 11. पोटाशियम के लिए आप मुझसे पूछ 19. जो भी नहीं आता पूछिए. मैग्नीशियम इज, कैल्शियम इज सिंक 20. 20. सल्फर इज सिंक 16 एंड आर्गन इज बेटे 18. ये मैं आपको बता रहा हूं. ठीक, तो सोडियम प्लस में क्या लिखूं? 11 माइनस के प्लस 1 कितना आ गया? minus 10. पोटाशियम प्लस में राजा क्या लिखूं? 19 minus 1. एक्सीलेंट. मैग्नीशियम प्लस 2 में क्या लिखूं? 12 minus 2. 10. कैल्शियम में 20 minus 2. 18. एंड सल्फर में क्या लिखूं? 16 plus 2. 18. Excellent. And argon is neutral, so 18. Now, अब आप इसमें से आइसोइलेक्ट्रॉनिक मुझे निकाल के बताइए. मैं गलती कर सकता हूं? Sodium and magnesium. Very right. These are having electron are there. Understand it? Yes, sir. Let's do the other pair. Potassium. Calcium. You're right. Sulfur and argon. These are another set. इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18. इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिख जाते हैं. Answer has been written here also. Since do you understand? I started today's session from here. Right? Your homework is 1 to 20 element. याद नहीं करना है. और अगर अभी 20 करोगे ना भूल जाओगे. वैसे तो शायद आपको याद हो.
अभी सिर्फ 5 याद करो, राइट? आफ्टर 2 आवर्स 5 को रिवाइज करो, अगले 10 को याद करो, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद पहले 10 को रिवाइज करो, फिर उसके बाद फिर अगले 5 ऐड करो. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू. जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस, राइट? सो एक बार जरा क्विकली रिव्यू हो जाए व्हाट वी स्टार्टेड विद एटम्स ग्रेड, एंड दिस इज द पीरियोडिक टेबल. आपको बताया गया हेवियर एलिमेंट्स नीचे रखे जाते हैं और लाइटर एलिमेंट्स ऊपर रखे जाते हैं. जो भी रेड कलर से लिखे गए हैं दीज आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हमारे देखते देखते you were given a strict advice, you are not supposed to memorize anything, just repeat it. If you are going to memorize you will be in trouble. Then हमने रिव्यू किया था, पिछली क्लास में हमने डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल किए थे एंड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था. अब हमने उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को आपको दिमाग में रखने के लिए बोला. दिस इज गोइंग टू बी नोन एज इंटेलिजेंस. इट इज समथिंग लाइक दिस. आप अपने रिश्तेदारों के, अपने पड़ोसियों के नाम और प्रॉपर्टी नहीं जानते थे, बट धीरे धीरे करके आप उनसे दोस्ती करेंगे तो आप उनके बारे में काफी चीजें देख पाएंगे. आज हमने नंबर बोला, मास नंबर को प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स बोला, एंड न्यूट्रॉन इज A-Z बोला. किसी भी न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, और हमने ये कोशिश की आपको बताने की फॉर एन आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस बट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी सेम. We did many examples based upon that. Important thing was introduced. X is going to be the symbol of the element. ये जो symbol आएगा ये धीरे धीरे करके आप build up करेंगे. Right now roll number 7, by roll number I mean number of proton, नाइट्रोजन का है. roll number 26 आयरन का है. you will learn roll number 13 you will learn aluminium का है. so that is what I have asked you. मुझे 20 एलिमेंट्स को याद करके देना, राइट? ऊपर मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता था. ऊपर मास नंबर इज गोइंग टू बी mass of proton and neutron rounded off to their nearest, yes, whole number. mass number, this is एक stress किया गया. atomic weight rounded off to nearest whole number is known as mass number. This is a misnomer. आपको देखने से लगता है proton and neutron का है. No, it is the mass of total proton and neutrons. ठीक? Then we introduced what is role of neutrons in the nucleus. Nucleus के अंदर जो neutrons हैं, they act as a policeman to protect the repulsion between proton and proton. Obviously तौर पे अगर हमारे समाज में गुंडे एलिमेंट ज्यादा हो जाएं तो हमें उसी प्रोपोर्शन में पुलिस भी ज्यादा रखनी पड़ेगी. अगर पुलिस ज्यादा है तो दैट इंडिकेट्स दैट हमारे समाज के अंदर रिपल्शन गड़बड़ी ज्यादा है. सो वी इंट्रोड्यूस न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो is going to be a sign of instability. The moment neutron proton ratio is going to exceed unity, that is going to be unstable. जितनी ज्यादा ये एक से ज्यादा होगी, that is going to be unstable. And every atom try to attain stability by emitting something. That emission can be beta particle, alpha particle, or gamma rays. Today we just told you beta particles are going to be flow of electron coming out of the nucleus. That's we taught you beta decay. Beta decay is going to be this. In beta decay, what happens is the number of neutrons decreases by 1 and protons increases by 1. In this way, the mother nature try to attain stability कुछ हद तक. But that does not guarantee कि this is going to live for the ये अमर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. इसी का भी काम होगा बट काफी सालों के बाद होगा. रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हमारे सामने टूट जाए हम उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, राइट? वी इंट्रोड्यूस्ड देन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन निकालना. आइसोटोप्स कैसे निकालते हैं? आइसोटोप्स का मतलब क्या होता था? atoms having same atomic number but different mass number, and in actuality they have basically different number of neutrons are going to be there. We calculated
द एवरेज एटॉमिक मास आपने कैसे लेना है? एवरेज एटॉमिक मास इज गोइंग टू बी द एवरेज ऑफ मास ऑफ वेरियस आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल हमने क्लोरीन का, आर्गन का, आयरन का हमने कोई एग्जांपल आपसे करवाई थी। क्लियर है? Then we moved further and we entered into a new concept, that is isobars. Isobars are atoms having same Z but different, I'm sorry, ulta bol gaya, having same mass number but different atomic number. Here the symbol is going to change because atomic number is going to be different. Isobars. After isobars, isotones, which are going to have same number of neutrons. Isoelectronic, which have same number of electrons. All of these are going to be required in the coming whatever discussion we are going to have. Example were given for isoelectronic. Isosters, having same number of atoms and same electrons. Examples, isotopic number is number of neutrons minus proton is known as isotopic number. हम मजाक में इसको isodifers बोल देते हैं. You can also remember that. Isodifer, but किसी को जाके कोट मत कर देना. This is neutron minus proton number. Why we did isodifers and the isotopic number? Because we were giving you certain example. That is going to be your homework today. With your heart 20 एलिमेंट को लिखना. जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं तब तक it will not go into your mind. Right? So we stop here and see you on, I think today is Friday ना, तो मेरा ख्याल हम मंडे को आपको दोबारा मिलते हैं. ठीक बच्चे, good luck and see you. Thank you, sir. Again. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Thank you. हाँ बोलो. सर एक अजीब सा डाउट है. पूछो जी. सर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं आइसोस्टर्स एंड आइसोडाइफर्स वगैरह क्यों यूज होते हैं? एक बात बता, तो नाम बताओ अपना. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अनन्या, एक बड़ा अमीर नेशन है अमेरिका, पता है ना? यस सर. वहां पे साइंटिस्ट वर वार्निंग दैट वी माइट बी एपिडेमिक. 2003 में एक बार हुआ भी था, सार्स नाम की चीज आई थी, बट दे डिडंट लर्न एंड व्हाट हैपेंड, लाखों करोड़ों बंदे मर गए, है ना? सो व्हाई वी आर डूइंग इट? बिकॉज आइसोटोप्स, किसी को ब्लड कैंसर होता है, अभी तो मैंने आपको बताया नहीं कि मैं फास्फोरस का एक आइसोटोप लूंगा, वो रेडियो एक्टिव है, कैंसर, और उसको मैं ल्यूकीमिया के अगेंस्ट करूंगा. किसी को थायराइड का कैंसर हो जाएगा, तो मैं उसके लिए मैं किसी ढंग से करूंगा कि थायराइड, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर आयोडीन होती है, मतलब वो आयोडीन को बुलाती है, तो अगर मैं उसमें कैल्शियम डालूंगा क्या मैं उसको ट्रीट कर पाऊंगा? नो. तो मैं उसके अंदर क्या डालूंगा? आयोडीन. वो अपने आप ही रेडियो एक्टिव आयोडीन उधर चली जाएगी और वो उसका कैंसर का इलाज करेगी. तुम्हें पता है अनन्या, आज क्या वार है? शुक्रवार. से एक बहुत बड़ा एवरेस्ट के जितना एक मीटेरॉइड निकला, तुम्हें पता है? परसों. वी वर सेव्ड क्योंकि वो हमारे से अभी काफी दूर से निकला था. ईयर 2079 में, ईयर 2079 में, जब तो कितने साल का होगा पता है ना? उस समय वो हमारी धरती के और पास होके निकलेगा. ये एक बार पहले भी तो हुआ था, जब धरती पे क्या हुआ करते थे? डायनासोर. तब उस वक्त मेरी अनन्या, मेरा साइंटिस्ट इज रेडी. वो अगर वो धरती के ऊपर आ रहा होगा, हम उससे पहले हम अपनी इंसान को, लाइफ को या तो इस ब्रह्मांड से बाहर ले जाएंगे या हम उस मीटेरॉइड को खत्म करने की भी कोशिश कर सकते हैं. Who will do it? The science will do it or the God will do it? Science will. So that is why we are studying. Everything which is going to be taught to you, my son, is going to be useful. अब एक बात बताइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है. She has asked a very good question. I will call it the question of the day. अनन्या, आप लोगों ने, आइंस्टाइन ने एक हमें बताया था टाइम लैप्स. तुम्हें शायद पता नहीं है, आपको पता लगेगा.
आइंस्टाइन कहते हैं कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, अभी आएगा बेटिया, अगले लेक्चर्स में आएगा, तो मास बढ़ता है। जैसे जैसे स्पीड कम होती है तो मास कम होता है। जैसे जैसे स्पीड का फर्क होता है, टाइम भी चेंज होता है। पता है तुम्हें? Time also accelerate, time also slow down. That was given by Einstein while he was discovering, he was studying about this. तुमने गूगल मैप्स यूज किया है? तुम लोगों ने Yes, मैप sir. लगाया, आप चंडीगढ़ से बाहर जाते हो, यू नो हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट। अगर आइंस्टाइन ने हमें वो ना दिया होता तो आप कभी 6 किलोमीटर के अंतर पे पहुंच सकते। सपोज आपने मैप ऑन किया है एंड यू वांट टू गो टू पीजीआई चंडीगढ़, अगर आइंस्टाइन ने वो थ्योरी ना दी होती तो आप पीजीआई से 6 किलोमीटर दूर पहुंचते, बिकॉज दैट प्रिंसिपल इज गुड़िया यूज्ड इन एवरीथिंग। तुम ये जो Okay, कंप्यूटर देख रहे हो, है कंप्यूटर में इसी चैप्टर में तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया जाएगा। दिस चैप्टर विल बी अ ग्रेट चैप्टर, रियली ग्रेट चैप्टर, एंड वी विल टेल यू हाउ वी कैन मेक सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर से अनन्या क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट निकलेगा, राइट? हमारी पूरी की पूरी टेलीकम्युनिकेशन निकलेगी गुड़िया। So my dear friend, you should feel motivated, you should feel enthusiastic that this class will be not that we will be teaching you chemistry hoti hai. I'll be telling you the frontiers of the science which can come out of whatever we are discussing. Do you understand? yes, sir. तो मोटिवेट हो, ये हर चीज तेरे काम की आ रही है। एंड गुड़िया, द होल साइंस कैन नॉट बी कंडेंस्ड इन फ्यू लेक्चर्स। मैं जितना आपको, आपने देखा हमें तकरीबन 2 घंटे लग गए, तो इस 2 घंटे के अंदर मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता हूँ ना। सो दैट इज व्हाई इट विल टेक टाइम, राइट माय डियर? Yes, sir. Okay, sir. So be enthusiastic. See you again, Vida. Bye bye. The meeting is Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. बहुत बड़े Thank you. साइंटिस्ट। गुड लक। Bye, sir. बाय बेटे।